So today we are going to discuss about the special expansion of water. So that is your anomalous expansion of water. So today we are going to discuss anomalous expansion. Anomalous expansion. देखो anomalous कौन एक्चुअली देखो पहले anomalous ले मीनिंग हला ताको आबो unusual ये हला unusual हला तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ anomalous expansion anomalous expansion पहले हला मन रखो गोटे वाटर रो गोटे स्पेशल एक्सपांशन जोड़ा कि से कंट्राक्शन हबा बदले से एक्सपांड हबो एक्सपांड हबा बदले से कहबो कंट्रैक्ट हबो तो दिस इज द anomalous expansion हला तो anomalous expansion is the type of expansion at which the water is expand instead of contraction or contract instead of expansion और सबले मन रखो ई जो पहले anomalous expansion हो सबले पहले आर टेंपरेचर सियो 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस so from this to this 4 to 0 a special expansion causes that is called anomalous expansion that is the unusual expansion okay तो एडा पढिया पूर्व तो बेसिक जिंस को तो प्लान पढथिबो से बेसिक जिंस होला हमें जानि जे रो इक्वल्स टू फार्मूला हला m by v रो माने हला डेंसिटी m हला मास v हला वॉल्यूम here रो is the density v is the volume m is mass m is the mass so if mass is constant so rho is inversely proportional to volume जो mass को हमें constant रखिबा rho को volume relation अछि and that is the inverse relation तो rho is inversely proportional to volume हार मानेला जदि तमर वॉल्यूम इंक्रीज हला तो रो डिक्रीज हो जदि वॉल्यूम डिक्रीज हला तो रो कोन हो इंक्रीज हो ता माने गुड एग्जांपल को देखो फॉर एग्जांपल गोटे कंटेनर अछि जे कंटेनर एथर वाटर अछि एथर फुल वाटर अछि ता माने आर वॉल्यूम अधिक अछि वो v इज मैक्सिमम सो रो विल बी मिनिमम जेते बेले आर जदि आपन हमें कूल करिया इफ यू मेक इट कूल जदि हमें कूल कर दबा कोन हो कूल करिया माने माइनस कूल करिया तो का हो ये आइस इज आइस जो आइस हो तो का हो आर का हो वॉल्यूम डिक्रीज हो रो इंक्रीज हो वॉल्यूम डिक्रीज हो रो इंक्रीज हो so this is the relation between rho v and m तो आमे इठी एक कांसेप्ट अप्लाई करिया हला तो देखो वो तो पहले कहथि anomalous expansion कहथि anomalous expansion सबले पहले कोठी हबो 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस हला तो देखो बोले मु नोच गोटे फॉर एग्जांपल भाबी जो दिस इज ए बॉक्स पहले कंटेनर अछि एथे सपोज हबो वाटर अछि दिस इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स Babo initially this was at room temperature. Babo initially see अछि pile 30 degree Celsius अछि. Babo this is the room temperature. त माने कोन वाटर मॉलिक्यूल सब प्ले कोन स्प्रेड हेइ अछि. जार माने वॉल्यूम इंक्रीज होबो डेंसिटी होबो डिक्रीज होबो. एटा प्ले को टेंपरेचर रे it is about room temperature that is your 30 degree Celsius. बर्तन मु कोन करे कूल करी लेट इट मेक इट कूल आको मु कोन करी कूल माने लेस देन 30 करी माने आउट मु कोन करे आको टेंपरेचर को कमे देली माने कोन हो अगेन प्ले कोन बोले आर वॉल्यूम प्ले आको कमे जो वॉल्यूम अगेन डिक्रीजेस तापर कोन इ जो जते प्ले कूल करले माने इ जो मॉलिक्यूल्स उडा को माने सेपरेट कमी जे ऑल द मॉलिक्यूल्स जो सेपरेटेड আছে माने the separation is decreases they will come towards each other They will come towards each other.
केते गला when it is about less than 30 degrees celsius again मु कोन लाको थरो कूल करली आको कूल करली जदि हम कूल करिया तो मु आको प्ले करली कूल करली 4 डिग्री सेल्सियस को पता ले इट इज अबाउट कूल अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस तो कोन बोले बोलो अगेन इट विल बी contract again it will contract हैला तापर तो मु कूल करी अपने एतने करी 0 डिग्री सेल्सियस पर कूल करी 0 डिग्री सेल्सियस पर कूल करी अपने केते डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस हैले मन रखो जेते बेले बेले मन रखो 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस कोमा बदे जदि कमेबे आप इफ टेंपरेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस तो मन रखो से contraction हबा बदल रे से expand हबो that will be expand तामाने वॉल्यूम increase हबो density decrease हबो and this expansion this 4 degree to up to from 4 degree to 0 degree से का हबो contraction बदल रे से expand हबो expansion हबो so this type of expansion is called anomalous expansion okay so anomalous expansion can be happen from 4 degree celsius to 0 degree celsius okay note it down the बदल पड़े पड़े हमें थर्मल स्ट्रेस पड़े अब पड़े थर्मल स्ट्रेस देखो थर्मल स्ट्रेस कोन ए स्ट्रेस तो थर्मल स्ट्रेस जा पूर्व तुम पहले फास्ट पढ़े मु स्ट्रेस कोन फास्ट पढ़ेबी स्ट्रेस कोन स्ट्रेन कोन एंड आउ पढ़े पे y हला यंग्स मॉडुलस मन रखो स्ट्रेस माने हला फोर्स बाय एरिया strain means change in length by original length so strain means change in length by original length okay that is delta L by L r माने लगा ना जेता मोर लेंथ अछि L अछि तब मु किछि फोर्स अप्लाई करली तो फोर्स अप्लाई करले कोन हबो r लेंथ किछि चेंज सेरा डेल्टा L हला by applying some force mg so ए केस ले कोन हबो स्ट्रेन आसियो स्ट्रेन माने हला चेंज इन लेंथ by the ये हला चेंज इन लेंथ ये हला L हला ओरिजिनल लेंथ तो स्ट्रेन माने हला डेल्टा L by L okay now we will go for Young's modulus मन रखो Young's modulus पहले y हला Young's modulus पहले फार्मूला हला stress by strain एतो पहले पढ़ा हो properties of matter रे एबे देखि को पूछले stress by strain y equals to stress by strain this will be discussion on your chapters properties of matter so simply I am telling you about only thermal stress so that I am using this term stress strain and Young's modulus so stress equals to y into strain y manala Young's modulus strain manala delta L by L this is called stress so this y equals to delta L by L y into delta L by L the power strain this is called strain okay now आगे अपने पढ़िया what is thermal stress देखो thermal stress कौन देखो पढ़िया thermal stress कौन हो for example तमरा गोटे सपोर्टिंग अछि बडे ये सपोर्टिंग डाटा
हम वॉल कंटेनर अच्छे वाल डाल अच्छा हमको एपड़े वाल अच्छा हम दियो मु कौन बोली दीटा वाल को सपोर्ट कर रॉड रखली गोटे हला रॉड रखली हम ये हला L0 हला तमरो इनिशियल लेंथ इनिशियल टेंपरेचर L0 माने हला लेंथ ऑफ रॉड at initial temperature बदल मु कहला आपको हीट करली आपको हीट करले तार टेम्परेचर राइज हो तब आप एलटी को आबो टेम्परेचर राइज हो दैट इज एलटी माने हला लेंथ ऑफ रॉड एट टेम्परेचर T दैट मींस चेंज इन टेम्परेचर हला चेंज इन टेम्परेचर हला डेल्टा T T माइनस दैट इज T ओके तो मन रखो मु कहिथिल मु जे कोसी रॉड को जदि हमें हीट करबे लेंथ बढ़ियो तब आबो लीनियर एक्सपांशन को आबो जदि ये तमरो लीनियर एक्सपांशन हला माने आ लेंथ बढ़ियो तो लेंथ बढ़िया पे आपको दरकार स्पेस दरकार डी तो देयर इज नो एनी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इट बिलाव किछ लेंथ बढ़िया पे किछ स्पेस नै तो कोन हो स्पेस रखले so wall को करो wall gives the force to the rod and that is called your thermal stress whenever temperature is given to rod the length of the rod increases but increase the length of the rod means there is no any space it is fixed with wall then what happens wall will give the force and that is called your thermal stress that means what happens if the wall is given to force means the length is in band set the length of the rod will be bent so what force or what stress by the wall in which the length becomes band that is called your thermal stress now what happened here I have told you because if temperature is given length is increases temperature दियाला length बढ़ला तो तार पहले कौन आसियो linear expansion आसियो there is a linear expansion so I have already told you that linear expansion तो LT minus L naught equals to alpha L naught into delta T delta T stands for change in temperature L0 stands for the length of the rod initial or that is the length of the rod at initial temperature that is called it is also called original length and LT is the length of the rod after giving temperature that is the length of the rod at final temperature this is the initial temperature is the initial length of the rod delta T change in temperature and alpha is the coefficient of linear expansion now this L0 becomes over here so LT minus L0 by L naught equals to your alpha delta T this is the change in length by original length that will be your delta L by L change in length by original length this equals to alpha delta T aku pahabo change in length by original length equals to strain plus 12 strain hala alpha delta T now we will find thermal stress mu कहथिलु मु stress माने कोन कहथि फॉर्मूला y into delta L by L that means stress equals to that is called thermal stress equals to केता सियो कोन कहथि फॉर्मूला stress equals to फॉर्मूला कहथि y हला Young's modulus it is given to Young's modulus into strain so ये हला y into strain मान हला delta L by L that is alpha delta T so this is the thermal stress that means thermal stress हला y alpha delta T this is the required expression then if I find force so force equals to that is a force on the rod equals to stress into area so stress manala that is called thermal stress manala ki stress is thermal stress into area thermal stress मान कितना असला y
alpha delta t into area मान हला a. So this is the force on the rod. Okay, note करो आपको फटाफट note करो. देखो पहले हमको क्वेश्चन दिया a steel rod of length 4 meter and area of cross section 20 centimeter square is prevented from expand when its temperature rises by 10 degrees Celsius. Calculate the thermal stress developed in the rod. Second one, force on the rod. Given Young's modulus of steel is given you 2 into 10 power 11 Newton per meter square. And alpha equals to coefficient of linear expansion, that is 1.2 into 10 power minus 5 Kelvin inverse given to you. So we will discuss, sorry, we will find thermal stress. ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କହିଥିଲି ଫର୍ମୁଲା ନା thermal stress ର पहले ଫର୍ମୁଲା ହେଲା thermal stress ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା y alpha into delta t. Y हला Young's modulus, alpha हला coefficient of linear expansion, delta t हला change in temperature. तो already हमको पहले y दिया है already given as given y दिया है already y equals to 2 into 10 power 11 Newton meter minus 2. Alpha la 1.2 into 10 power minus 5 Kelvin inverse. Delta T पहले मन रखा, this is rises by 10 degrees Celsius. Temperature change हला. आपको मैं Kelvin रे convert करले कौन करें हमें delta T माने 10 degree plus 273 minus 0 degree plus 273. That is how much here? 10 degree हला. When Kelvin or Celsius whatever it is. So thermal stress equals to y alpha delta t. So y equals to how much? 2 into 10 power 11 into alpha. Alpha is already given you. This is the Newton per meter square. Newton per meter square. Into alpha is already given 1.2 in 10 power minus 5 Kelvin inverse. And delta t is the 10 degree Kelvin. 10 degree Kelvin. So Kelvin inverse cancel. So that is equals to 2.4, 1.2 into 2, that is 2.4 into 10 power 11 minus 5, that is 10 power 6, again plus 1, that is 10 power 11 minus 5, 617, Newton meter minus 2, this is the answer. Next we पता force on the rod, it is the first point. Second है पहले पता मुझे force on the rod. Force पहले फॉर्मूला करो thermal stress into area. Thermal stress into area. तो thermal stress कहते असला 2.4 into 10 power 7 into area. Area बोले आपको दिया ही area. Area is given 20 cm square. Listen here area equals to 20 cm square means कहता है 20 cm square. आपका मीटर कन्वर्ट करिए. So 20 centimeter also 1 centimeter 100 meter, sorry 1 by 10 power minus 2 meter, that is 10 power minus 2 square, that is 20 into 10 power minus 5 meter square. So that is into 20 into 10 power minus 5 meter square, again into Newton per meter square. So meter square will cancel. So this will be equals to 10 power 7, 10 power 4. कितना है 10 power असला 3 asla, again 2 asla, that is the 4.8, 20 into 2.4, that is the 4.8, our 0 wala 7 minus 4 la 3 hala, again 4, that means 10 power 4 Newton. So this is the force on the rod, this is the thermal stress on the rod. Okay, note it down.